Okay, welcome back. So continuing our classes. In the last video lectures, we have discussed the classification of bacteria, right? So we have classified bacteria into various groups based on their fusion of cell, based on their presence or absence of flagella, and then based on their shapes, right? So we have classified bacteria, and we have seen the characteristics of bacteria. So there is one more classification of bacteria, so we will study this. So there is one more classification of bacteria, so I suppose it is point number 4. So continuing our bacterial classification. So there is one more. So this classification is based on gram staining. Okay, this classification of bacteria is based on gram staining. It is done in the laboratory. Okay, it is done in a laboratory, and it is classified on the basis of gram staining into two types: gram bacteria and gram positive bacteria and gram negative bacteria. So this classification is based on gram staining. So it is done in lab. Okay, scientists have performed some experiment to classify bacteria. Okay, so based on this, it is classified into two types: gram positive bacteria and gram negative bacteria. Okay, so scientists ने एक experiment किया lab में. So what they did, they took two slides. Okay, you might know slide. Nowadays you do practical in your school. So slide लिया, दो अलग slide लिया, दोनों slide में अलग अलग बैक्टीरिया दिए. ओके, जो भी हो बैक्टीरिया दिए. So in one slide they put some bacteria, the other slide they put another bacteria. Next what they did, they add some chemicals. ठीक है, the first chemical they use are crystal violet. Okay, these things are not there in your NCERT book, but it is important for your entrance level. So what they did, they took two slides. So they put some bacteria on those two slides. Then what they did, they add some chemicals. Okay, chemicals like first they add crystal violet chemicals. ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वायोलेट केमिकल्स को ऐड किया. देन आफ्टर दैट दे ऐड आयोडीन. दोनों स्लाइड में क्या किया, पहले क्रिस्टल वायोलेट ऐड किया, आफ्टर 1 मिनट आयोडीन ऐड किया दोनों स्लाइड में, एंड दे फाउंड आउट दैट द कलर हैज़ बीन चेंज्ड. From the original color, the color has been changed into purple. So क्या देखे उन्होंने, एक पर्पल कलर देखने को मिले दोनों स्लाइड में जहाँ पे बैक्टीरिया दिए गए थे. Okay, so they found out that both the slide appears with purple color. Then again, scientists add one more chemical, safranin. Then found out that one of the slide out of two, one of the slide become red color. Okay, दो स्लाइड लिए थे ना, तो एक स्लाइड क्या हो गया, रेड कलर में बदल गया. One slide become red color, the other slide remain as it is purple. The color did not change in other slide. So from that experiment, scientists have classified bacteria into gram positive bacteria and gram negative bacteria. Those bacteria which remain purple color, they gave a name gram positive bacteria, and those bacteria which become red color, they gave a name gram negative bacteria. So this is the basic experiment, okay, done by scientists.
to classify bacteria into gram-positive and gram-negative bacteria. So this thing will not come in your exam, but you should know. Okay, so these are the basic experiment I have explained in a simple way. So when you go to higher studies, so you have to discuss this, you have to study this in details. Okay, so for the first time, this experiment was done by a scientist, Hans Christian Gram. Okay, remember Hans Christian Gram. So this scientist first performed gram staining technique to classify bacteria into gram-positive and gram-negative. Understood? So what they did, they took 2 slides, they ate some bacteria on it. They don't know what is that bacteria. Okay, they just ate some random bacteria in 2 slides. So they ate crystal violet in both the slide, and they kept it for 1 minute, let them dry. For 1 minute they kept, and then they add one more chemical, iodine. Again they kept for 1 minute to dry. Then they found out that both the slide become purple color. Okay, both the slides become purple color. Then what they did, they again add safranin in both the slide. Okay, and then they found out that out of these 2 slides, one slide become red in color, one slide remain as it is, purple color as it is. So from that experiment, the scientists have given the classification of gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. So gram-positive bacteria are those which remain purple color even after addition of safranin. These are the chemicals. Okay, safranin, iodine, crystal violet, these are the chemicals. So, and those bacteria which become red color after addition of safranin, those bacteria are called as a gram-negative bacteria. So this is the experiment done by Christian Gram, and he classified into 2. Based on this experiment, he classified bacteria into gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. Okay, I hope you understood this. This is a simple experiment. Okay, exam में नहीं आएंगे ये सब, but still you should know. So okay, so we need to see the differences between gram-positive and gram-negative bacteria. So I'm going to write it down one by one. See, let me tell you one thing. I don't know if I said it before, so let me say it again. If the question asks, write the differences between this and that or anything, always make a chart. Okay, हमेशा chart बना के आंसर लिखना. जब भी क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंस के बारे में या कोई भी डिफरेंशिएशन के बारे में, हमेशा चार्ट बनाओ और पॉइंट में लिखना आंसर. ठीक है, इफ इट इज़ 2 mark, at least try to write minimum 3 points. If it is, at least try to write 3 points minimum and maximum 4 points if it is of 2 mark. और एग्जाम में 2 mark के लिए पूछते हैं डिफरेंसेस, 2 mark में ही आते हैं. ओके, so gram-positive bacteria, the first characters we can write that the cell wall is made up of peptidoglycan. Cell wall is made up of peptidoglycan. एक molecules होते हैं peptidoglycan. So their cell wall is made up of peptidoglycan. In case of gram-negative, their cell wall is also made up of peptidoglycan. Same composition रहते हैं. ठीक है. So कुछ differences पाए जाते हैं. We will see. So in case of gram-negative bacteria, their cell wall is also made up of peptidoglycan. Same होते हैं composition. Alright, so next what we can see,
cell wall is rich in teichoic acid. ओके उन लोग का सेल वॉल में एक थेकोइड एसिड रहते हैं. इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव द सेल वॉल इज विदाउट थेकोइक एसिड. एक एसिड होते हैं उसका नाम है थेकोइक एसिड, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंस रहते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. ओके इसीलिए क्यों, क्योंकि उन लोगों का सेल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थेकोइक एसिड even after the addition of safranin the color did not change, it remains purple. Because in gram negative bacteria the teichoic acid is not there, so after the addition of safranin its color changes into red color. Okay, so these are the things that you need to know. Next thing what you need to know, example, let me give you some example. In case of gram positive bacteria we can take Streptococcus species. I'll give you one example. Okay, in case of gram negative bacteria example we can take E. coli. All right. Okay, so these are the basic things that you need to know now. So in NCERT book it is not there gram positive and gram negative, but still it is important, you need to know. So we have classified bacteria into 4 categories based on their fusion of the cell, based on their shapes, based on their flagella, presence or absence of flagella, and now based on the gram staining. Okay, so we have seen the characters of bacteria, we have seen the classification of bacteria. Now we will see the reproduction of bacteria, how bacteria reproduce. So next topic will be reproduction of bacteria. See, when I'm talking about bacteria, that means I'm talking about which kingdom? I'm talking about Monera kingdom, right? We are still in Monera kingdom. Eubacteria. Okay, so Eubacteria is nothing but basically a bacteria only. It is a modern bacteria. It now exists, जो अभी पाए जाते हैं सब एरिया में. So that bacteria are known as Eubacteria. Okay, so remember Archaebacteria are the ancient bacteria, the oldest bacteria, early form bacteria which is no more longer exist now. We may find some, but most of it is extinct. ठीक है. So bacteria reproduction. Now bacteria can reproduce into 2 types, asexual and sexual. Okay, so bacteria दोनों types के reproduction कर सकते हैं. एक तो है asexual reproduction and another one is sexual reproduction. So reproduction, so we can classify. So bacterial reproduction shows 2 types of reproduction. ठीक है, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction. So I think you already know the differences between asexual and sexual. School में I think you have already got this term asexual and sexual, right? School में already पाई चुके होंगे तुम लोग. तो इस again let me tell you. Okay, sexual and asexual, I have said it before. Whenever in biology in some words the A comes in first, that means something is missing. Okay, something is missing. So in common sense to understand,
Asexual reproduction means there will be a fusion of only one gamete. Okay, यहाँ में only one sex होंगे. Okay, there will be only one sex will result in the formation of gametes in case of asexual reproduction. In case of sexual reproduction, two opposite sexes will be involved. यहाँ में मेल और फीमेल दो opposite sex involve होंगे, दो अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन होंगे और दोनों अलग गैमेट का फ्यूजन होंगे, तब जाके जाइगोट बनेंगे, उसके बाद होंगे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे, राइट, इन केस ऑफ सेक्सुअल. बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, एक ही ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे दो अपोजिट सेक्सेस का मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्व नहीं होते हैं. यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्व होते हैं, वही क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं. इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स. आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस, बट अगेन सो रिवाइजिंग योर topic this again, so refreshing your brain. So we need to see now bacterial reproduction. Now bacterial reproduction shows two types of reproduction, asexual and sexual. Now in asexual reproduction, bacteria shows three types of asexual reproduction again. So asexual reproduction में bacteria तीन प्रकार के asexual reproduction show करते हैं. पहले तो binary fission, it can show binary fission. Binary fission में क्या होते हैं, one cell, ठीक है, give rise to two daughter nuclei. देखो न्यूक्लियस सेम है, ठीक है. न्यूक्ली जब हम लोग प्लूरल फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं देन वी से न्यूक्ली, तो सिंगुलर फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, सो वन सेल गिव राइज टू टू डॉटर न्यूक्ली, सो इट्स सेल विल डेवलप ए ऑर्गेनिज्म. ओके, एक सेल से दोनों डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों डॉटर सेल फिर से दो डॉटर सेल फॉर्म करते हैं. So the process goes on. So this type of process is known as binary fission. Okay, समझ में आया. So एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस करते हैं, वो दो सेल से दो सेल फिर प्रोड्यूस करेंगे. So ऐसा प्रोसेस जाते रहते हैं. So this type of fusion is known as binary fission and it is a type of asexual reproduction shown by bacteria. ठीक है, so this is the first type of asexual reproduction shown by bacteria, binary fission. Okay, एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस करते हैं, दो सेल से फिर दो सेल प्रोड्यूस करते हैं. सो ऐसा चलते जाते हैं. द प्रोसेस गोस ऑन. सो एंड दिस बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन दैट यू नीड्स टू रिमेंबर. टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फ्यूजन ऑकर होते हैं. फेवरेबल कंडीशन मतलब जहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होंगे, डिम लाइट होंगे. सो जब कंडीशन फेवर्स करेंगे, सब कंडीशंस सब ठीक ठाक रहेंगे, तब बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन शो करते हैं. ठीक है, सो देयर इज वन मोर नोन एज एंडोस्पर्म और एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन. Endosspore formation. See, in my class, my notes will be simple. Again, I'm telling you, my notes will be simple. So, okay, I'll try to clear your concept. If you clear your concept, you can write by your own. Okay, so along with my lectures, follow NCERT book. If you don't understand something, if you don't understand, go to your NCERT book. You will find it there. If you unable to write some notes, relate my topic with NCERT topic and write notes from there. So if you find again any difficulties, I'll clear your doubt. Okay, so first of all, try to clear your concept. If you clear your concept, everything will become easy. You can write by your own. Okay, so this is higher secondary school, so things will change from your school life. स्कूल में जैसे होंगे अभी ऐसा नहीं होंगे, अभी थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को. ठीक है,
सो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? सो बैक्टीरियल बॉडी it forms spores. Okay, it forms spores. वो produce spores produce करते हैं and result into the development of organism. It forms spores and give rise to new organism is known as endospore formation. Okay, so understood? It forms spores and result into the formation of new organism. So and this takes place under अनफेवरेबल कंडीशन. जब एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवर्स होंगे तब बैक्टीरिया एसेक्सुअल एंडोस्पोर फॉर्मेशन शो करते हैं. ऑलराइट, सो देयर इज वन मोर, बडिंग. So budding is very rare in only some bacteria, few bacteria we find. Okay, it is very rare, so we can write very rare. So it shows a rare type of asexual reproduction. Budding में क्या होता है? A small outgrowth develop in the body. ऐसा small outgrowth develop in the body, ठीक है? And give rise to new organism. So bacteria का body में एक छोटा सा बड डेवलप होते हैं, बड फॉर्म करते हैं either outside of the body or inside of the body. ठीक है? Suppose this is bacterial body. Let me just give you a rough diagram. Suppose this is bacterial body. Suppose take for example some bacterial body. Okay? In budding what happen? A small bud develop, bud either outside of the body or inside of the body. Okay? If it is developing outside of the body, so like this, a small bud develop, and this bud later on give rise to a new bacterial body. Okay, so बाहर भी develop करते हैं, अंदर भी develop करते हैं. ठीक है? So that's it. This is the process of budding, and it is very rare. In some few bacteria only it is found. Okay, so these are the types of asexual reproduction. Coming to sexual reproduction now. In sexual reproduction we have the first type, ट्रांसफॉर्मेशन. देखो अभी यहाँ पे सिर्फ बेसिक थिंग्स जानना है. When you go to higher studies level, you have to study all these things in details. Though it looks very simple, but it is not as so. Okay, प्रोसेस होते हैं इसका, कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोसेस थोड़ा, इसको डिटेल्स में जानने से पता चलेगा. लेकिन अभी के स्टेज में सिर्फ टर्म्स जानना है और थोड़ा आइडिया जानना है. अगर मैं पढ़ाऊँगा डिटेल्स में तो आउट ऑफ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. सो वी शुड स्टिक टू आवर सिलेबस. आई विल गिव यू द थिंग्स दैट ओनली यू रिक्वायर्ड, नॉट मोर देन दैट. ज़्यादा देने से क्या होते हैं, बेसिक थिंग्स हम लोग क्लियर कर नहीं पाते. ठीक है? एक बकेट में उतना ही पानी डालना चाहिए जितना पानी वो स्टोर कर सके, नहीं तो पानी सब गिर जाएगा. जस्ट लाइक दैट आवर ब्रेन इज़ लाइक दैट. So with the age, so we will go slowly and steadily. Okay, so ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द साइंटिस्ट नेम. यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. सो ट्रांसफॉर्मेशन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय ग्रिफिथ. इस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिथ. सो ही वॉज द मैन बिहाइंड हु फर्स्ट प्रपोज ट्रांसफॉर्मेशन. So transformation के में क्या होते हैं? Bacteria they passed that transfer the genetic material, that is DNA. बैक्टीरिया अपना DNA ट्रांसफ़र करते हैं दूसरा बैक्टीरिया का बॉडी में डायरेक्टली, इन अ सिंपल सेंस. ठीक है? एक बैक्टीरिया, मेल बैक्टीरिया अपना DNA को ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल बॉडी में. सो वो प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. एंड वाज फर्स्ट प्रपोज बाय ग्रिफिथ. ओके, सो इन सिंपल वे, जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ इन अ सिंपल सेंस. सो इन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बैक्टीरिया ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल directly into other bacterial body.
जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, ओके। डीएनए कहाँ होते हैं? सेल का अंदर होते हैं, ओके। सो ये सब देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, अभी के लिए सिर्फ याद रखना। सो व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन? देखो नाम में ही मीनिंग छुपा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र करता है? अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है। एक बैक्टीरिया का बॉडी से अलग बैक्टीरिया का बॉडी में डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। कौन पहले प्रपोज किया था? ग्रिफिथ। इस साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। So next we have in sexual reproduction transduction. Transduction. So first of all, again we need to know the name of the scientist who first proposed transduction. It was first proposed by Ginder and Lederberg. Lederberg, L-A-D-A। नहीं स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गया स्पेलिंग। So Ginder and Lederberg, the two scientists first proposed transduction. Transduction में क्या होता है? Bacteria pass their genetic material into other bacterial body with the help of a virus, okay, with the help of a virus। एक वायरस का मदद से एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल पास करते हैं दूसरा बैक्टीरिया का बॉडी में, ओके। इन ट्रांसडक्शन व्हाट हैपन? ट्रांसफ़र में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। अपना सेंटेंस तुम लोग मॉडिफाई कर सकते हो इफ़ यू वांट। So in transduction, the bacteria transfer their genetic material into other bacterial body with the help of a वायरस कॉल। वो वायरस का नाम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज, ओके। द नेम ऑफ द वायरस इज बैक्टीरियोफाज। सो इन ट्रांसडक्शन व्हाट हैपन? वन बैक्टीरिया द फर्स्ट इंजेक्ट देयर डीएनए into the bacteriophage body. Now the bacteriophage will carry that DNA and it will transfer into other bacteria, okay। So in simple sense বুজি পাইছা? এটা ব্যাকটেৰিয়াই প্ৰথম কি কৰে? নিজৰ যোনটো ডিএনএ থাকে সেইটো এটা ভাইৰাছত পাছ কৰে। এইটো ভাইৰাছৰ নাম হ'ল ব্যাকটেৰিয়োফাজ। সো সেইটো ভাইৰাছৰ বডিত পাছ কৰি এই ভাইৰাছে সেইটো ডিএনএ কেৰি কৰে তো আন এটা ব্যাকটেৰিয়াল বডিত ট্ৰান্সফাৰ কৰে। সো সেইটো প্ৰচেছকে আমি ট্ৰান্সডাকশ্যন বুলি কওঁ, okay। So that is transduction. There is one more. I'm going to wrap this one. So there is one more in case of sexual reproduction. Number 3, conjugation. Okay, this one is important. Mostly the question comes from this part, transduction. 1 mark ले आएंगे आने से अभी। So first of all, we need to know the scientist name. Again, it was proposed by Lederberg and Tatum. Try to see this spelling, okay? Lederberg. Try to see this spelling. I think it's L-A-B-E-R-G. Okay? Again, try to see this spelling. Lederberg and Tatum. So conjugation. In conjugation, what happened? A bridge is formed between two cells. Okay? बैक्टीरिया का एक सेल होते हैं और दूसरा सेल होते हैं। सपोज ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन
जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, एक मेल का सेल और एक फीमेल का सेल, दोनों सेल के बीच में एक ब्रिज फॉर्म करते हैं। सपोज ये मेल गैमेट्स हैं, ये फीमेल गैमेट्स हैं रिप्रोडक्शन का टाइम में, तो मेल गैमेट्स का अंदर में डीएनए है, फीमेल गैमेट्स का अंदर में भी डीएनए है। तो क्या होते हैं, ये दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्म करते हैं, एक ब्रिज फॉर्म करते हैं। उसी ब्रिज को हम लोग कॉन्जुगेशन ब्रिज बोलते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन व्हाट हैपन, ए ब्रिज इज फॉर्म बिटवीन टू सेल। बिटवीन टू सेल मतलब मेल एंड फीमेल सेल। सेल नहीं बोल के हम लोग गैमेट भी बोल सकते हैं, बिटवीन टू गैमेट। सो व्हेन दिस ब्रिज इज फॉर्म, द मेल डीएनए, ये मेल डीएनए, इट विल transfer into the female body and it develop into a new bacterial body. This process is known as conjugation. Okay, a conjugation what happened? In simple sense we can say a conjugation bridge is formed between two cells, and this process is known as conjugation. That's it. So this is the process how it happened and was first proposed by Lederberg and Tatum. Okay, so sexual reproduction, all those terms are very important in case of bacteria. So bacteria we have discussed, we have completed the kingdom Monera. Next we will see fungi kingdom. Okay, that is our 5 kingdom system of classification. In next we will see.